88 now. He went to IMF, but he writes extremely well. Two Indian writers write extremely well. One is him, and the other is Ruchir Sharma. You note karo Ruchir Sharma. Bahari ko se editorial bahari wo. Whenever you Ruchir Sharma lekho, Ruchir Sharma, and ये है ना नितिन देसाई. अगर जितना जहाँ आर्टिकल बाहरी वेडी पढ़िबो, please read them carefully because they're very they're written in a very easy style. But it is not a very complicated economics article. It is a very so is that clear to all of us? Are we all clear? Are we on the same page? We are on the same page. Okay. So with that, we will yesterday, Deepak Babu, I gave them some introduction to economics, where essentially I defined economics, where I said there are two branches of economics, macro and macro. Then we went through a few concepts. What are the concepts? Some concepts, tell me. Animal spirit, equilibrium, reverse operated, capitalism. What else? Nine. See, he has already circulated. If I find anyone not having read my PPT, I'll be very, very harsh with him. Are you getting my point? I'm coming here because I love teaching. And I'm coming here not for money. It is only because of my love for teaching and because I was like you in 1973. But then I got Indian Economic Service because of my hard work. I'm giving you different. समस्त डरती किंतु सब मो क्लास रे फुल क्लास था, always full class. तमे किड university if you go there also मो क्लास रे सब full class. So I say that if you attend my class and if you follow me, तो success is 100%. मो क्लास तो नसुला तो failure is 100%. कई तो मो साजो के पेरे. Are you all getting me? Are we clear on these things? तो पूरा पढ़ी के आसीबा. Tell me what concepts did we, any interesting concept you had? You tell me what concept did I teach? What markable different paradox. So what I'm trying to say, then we covered a few economic concepts. Then we also looked at economic systems. What are the three economic systems we looked at before you leave? What are the three economic systems we have read? Capitalism, communism, and mixed economy. Okay. So and India is what? This is what I want. This is what I want. You should be completely with me. बुझुस तो कथा ना सेले किछि होबन एमिति बसिरे अनै थिवो तारा अनै थिवो सर कोनटा कहउचंती. It would be your loss only. It would be your loss only. Please attend all my classes. Please follow those PPTs, see for yourself. I can take half an hour extra for those of you who come late. I have no difficulty. तुम यदि पढ़े चाहूच मत घंटा अधिका पढ़ा मोर कौन सी डिफिकल्ट नहीं कि मुझे जानी जे तुम बदमाशी कर बसिक खाली समय वेस्ट कर. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम. आर यू ऑल गेटिंग मी? I am very clear, extremely clear. So Deepak, I just wanted to mention to you, capitalism father ke Adam Smith ର ବହି ନା କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି sir? ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କମ୍ୟୁନିଜମ ର फादर କିଏ? କଣ ତା ବହି ନା? ଦାସ କାପୁର. ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି ର କିଏ फादर? Keynes, John Maynard Keynes. ताका बही ना कौन? General theory of income. केबे लिखिथिले? 19. अरे वंडरफुल. देखो तो काल तुम चॉकलेट दे के आसी, पौधु चॉकलेट दे के आसी. मु सबले चॉकलेट दे के आसे बुझले पिलान पई. आउ पैसा भी दे के आसे किंतु के थरुटे माडा खाइथि गोटे पिला 100 टका नै गला गोटे. थर गो once only गोटे 100 रुपीस दे गला. कहला सर काई नै कि जाइनी.
मु कहली एटा तो टंका पाइबो बोली बुझलो तो बहुत बही बांटी मु किंतु सब अच्छा एनीवे सो दिस टुडे वी स्टडी नो डाउन neoliberalism. Neoliberalism. I want you to be there so that you understand the kind of drift. Neoliberalism. Neoliberalism. Hello. A new concept, please note down, was introduced in 1948. In 1948, by a person called Hayek. Frederick Hayek. H-A-Y-E-K. H-A-Y-E-K. Frederick Hayek. He was an Austrian economist. And he, please note down, the book's name is Road to Serfdom. Road to Serfdom. Road to Serfdom. कौन कहला कोटी करी एटी कहला ताप 10 कुछ भी हां तापरे सर ऑटोमेटिक सिलेक्ट करी हां रोड टू सर्फडम जी कहबो सर्फ माने कोन मु ताको गोटे चॉकलेट देबी नेक्स्ट क्लास रे सर्फ माने कोन व्हाट सर्फ S E R F सर्फ कोड व्हाट इज सर्फ लैंड को कुछ पढ़छो टेनेंट को कुछ पढ़छो सर्फ इज अ टेनेंट आर यू ऑल गेटिंग मी टेनेंट भाग चासी आर यू ऑल गेटिंग मी सर्फडम माने बुझलो तो भाग चासी रोड टू सर्फडम से गोटे बहुत बड़ बही लिखथिले 1948 रे लिखथिले रोड टू सर्फडम एट लिखिछि So the road to serfdom, he argued, he said two things, just note down two things. That we should have minimum government. Government should be minimum. Government ro kama hala three things. Please note down. Law and order, defending the country, printing currency, and foreign policy. कौन सा टाला? Law and order, huh? Defending the economy, out of currency, out foreign policy. एक चारिटा गवर्नमेंट का काम बाकी केते लडू केते साइकिल हबो केते स्टील हबो केते सीमेंट हबो दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइवेट सेक्टर आर यू ऑल गेटिंग मी अमर जिमती मिस्टर मोदी सेज मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस प्लीज नोट डाउन मिनिमम तो तू पचारे इंटरव्यू रे दिस गेट दिस कांसेप्ट ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट ये सार कर बुद्धि होची फ्रेडरिक हायक रो बुद्धि सार एटा फ्रेडरिक हायक टू नहीं चलते फ्रेडरिक हायक एक कथा कहितला जे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से करितला एटा सार करो सार बहुत बुद्धन लोक तो सार कहले जे सेटा होची मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अरे एंड मिनिमम गवर्नमेंट कोन बाकी जहां बनेवा कथा प्राइवेट जेमती हमर दीपक को करछथि प्राइवेट इंस्टीट्यूट करछ यदि जदि चले भी सला गवर्नमेंट चलेबो सला पिला आसीबे नै दोस्त सोने से 10 लाख माडो तो उधर के तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का आसले नै कहीं तुम जोता कहीं तुम पेन कहीं हम बुझो तो आर यू ऑल गेटिंग मी यू विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स हम आसुनी सा सोची क्लास रे यू विल इन्फॉर्म आर यू ऑल गेटिंग मी हसन एटा दिस इज द ट्रुथ प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट बैंक को जाओ सा परे आसो सा सर्वर काम करबी यू गो टू ICICI बैंक इट इज वर्किंग आर यू ऑल गेटिंग मी सो ही इज द गाय एंड ही आल्सो वाज मच अगेंस्ट प्लीज नोट डाउन सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग he was also against centralized planning कोटे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे थिला रशिया रे 1970 कहतली रशियन रिवोल्यूशन आला प्लानिंग ता होतला टॉप रो मने पड़छि
kali kahitili. In communism, planning is done from where? From the top. Like India, we had a planning commission. So similarly, in Russia, they also had a planning commission. Konta naada thila je kisi kahidawo to short answer. Kali kahitili. Gauss plan. Please note down. Gauss plan. Gauss plan. हाँ एबे मने पड़ची Gauss plan. एटा कहितला तो शॉर्टा मार दी थन मोड. Gauss plan. GOSPLAN. Are you all getting me? एटा को सो नेहरू बुढ़ा सुनिथिला. बुझले कि नेहरू बुढ़ा जाइथिला रसे जथला 27 रे. सी देखिला सळा ए Gauss plan टा बहुत बढ़िया चलछि रे. से कहते भारत जदी स्वाधीन हबो मु ए इंडिया रे बनेबी. तुम गोटे जोक रे कहूनी. Are you all getting me? Amar jo great leaders achanti. So they go outside, they see where countries have done very well. So 1927 re, he was invited to Russia. Nehru was invited to Russia when they were celebrating the 10th year of Russian Revolution. So he was the chief guest. The Republic Day so he was the chief guest in 1927 parade in Russia. से तो से देखला सला बड़ा बहुत बढ़िया करछंती कोन कथा बुझी तो मु as a matter of interest 1985 रे for the first time मु अब्दुल कलाम संगे मॉस्को जाइथिले 1985 रे पूरा संगे आमे तो गलु गोटे यूक्रेन होटल अछि 85th फ्लोर तो गोटे मॉस्को रिवर अछि बुझलो तो मॉस्को रिवर हम महाराज जिनते अछि मॉस्को रिवर core 7 building achi. They're called 7 sisters. Okay. Each building is 85 storied. And we were staying in the 83rd floor. More life re kebe 83rd floor mu imatili. So neither was Kalam. So we were taking a walk. Then we found these 7 sisters. So one of them was a university, one was a library, one of the science center, and one was a hotel. So we asked somebody that how much time they took to construct these buildings. Okay. So he was told that it took only 3 years' time. In 3 years' time, an 85-story building was constructed in Moscow. Even the American students do not believe that Russia that could build buildings which are of 85 stories. Say to Kalam Kala, it is a superpower. Superpower is not just by what is your GDP. Superpower is known by this. Are you all getting me? 1920 so he said that communism. Centralized planning. Are you all getting me? How was it done? Because they were having central plan. Are you getting my point? Say कहला जी capitalism रे ए सब शिल्पपत्र खाली पैसा खाई झियो बागर 200 कोटी टका खर्च करे पो बागर बुझलो तो एउडा का सला खर्च करिवे एउडा का लूट लुंठन करके लोकन करिवे किंतु जदि हमें एटा गोटे थारा मुंडरे आसिला नेहरू चाचा का मुंडरे आसिला जदि शिल्पपति को हमें दबा they will swindle this country. They will work for profit. They will not work for welfare of people. But I am not saying right or wrong. This is the kind of idea which came to his mind. जो a capitalist system, तमें को तो पूंजीवाद को तो तमें तो एक पूंजीवाद कला से पूंजी केम ते लुंठन करिवो हम करिवो किंतु यदि हम कम्युनिज्म करिवा that will go for welfare and social justice. Are you all getting me? Welfare, social justice हला 85 storied building जदि हला ताले से कौन खराब अछि सीट में से चॉइस कला कहा को चूज कला socialism चूज कला. Are you all getting me? Have you understood? And so therefore to sum it friends, one is communism which believes in wealth creation. One is socialism, communism, which believes in social justice and equity. And the third is neoliberalism, which believes in minimum government.
Are you all getting me? ए सब अल्टरनेटिव परे चाचा ने कहले हमें भारत रे कोन करबा. Let us now see what he did. So yeah, so it thala tapre. So now let us see. Now let us see. Chacha Nehru kole kon. Bujhi purjone kotha. Most of the story, are you understanding it a story or not? Are you all getting a story or not? The story is the ideology, story of ideology. Story is of ideology and economic system. Are you all getting me? आमे जो संविधान अच्छी जो सार पढ़े liberty, equality, fraternity, social justice. Eighthre, it is again a function of the system that you are operating. तमे भी कहे काली मोदी कहबे जे साला हमें कैपिटलिस्ट माने कम्युनिस्ट हिजबा. हमारा राहुल बाबा कहे हमें सोशलिस्ट हिजबा. मो मा तो मो जजमा थिले सा सोशलिस्ट हिजबा. Are you all getting me? So jokes apart, a leader can turn the destiny of a country. ताको डुबे दी परिबो, ताको उठे दी परिबो. Are you all getting me? He can either propel it up. Just to give an example to you, just go back. Now जो neoliberalism जो neoliberalism था लिखा तमें ए neoliberalism टाको ये अडॉप्ट करा लिखा रोनाल्ड रेगन 1921 ରୁ 1999 पर्यंत. He was president for 2 terms. Can you tell me what was Reagan in Ronald Reagan? से कौन प्रोफेसर ने थिला जे कहि दबो पांचटा पाइबो. Ronald Reagan को he was an actor. He was a Hollywood actor like Shahrukh Khan. यदि काली सलमान खान था प्रेसिडेंट हबो से होची Ronald Reagan. So was president for 2 terms. So he followed neoliberalism. Are you all getting me? तो बुझु से कथा नहीं से खाली neoliberalism कौन कले जो highest, please note down, the highest tax rate when he took over as president was 60%. जहार income $1 million अधिका थिला तांकर tax rate थिला 60. He brought it down to 30%. Please note down, he brought it down from 60% to 30%. So what? There was a lot of growth in industry. Corporate sector का तांका पैसा आसला 60% जाउतला तापरे बुझबो जरूरी कथा. So he was the first person who believed that if you have a very low rate of taxation, then the business people will come forward and invest. बोले से काहे सा रिस्क नबो तो कोनो बुझबो जरूरी नहीं. तार चेली थिला मार्गरेट थाचर. तार चेली नंबर 1 से मार्गरेट थाचर तब कहते आयरन लेडी बोली कहती. ये कहला 79 ରୁ 90 पर्यंत ये थिला प्राइम मिनिस्टर यूके. तब कहती आयरन लेडी बोली कहती. बुझलो तो आयरन लेडी. तब कहती इंदिरा गांधी जहां तार इंदिरा गांधी रो से चाची हो चाची 420 मार्गरेट थाचर आयरन लेडी. ए दी जण मार्गरेट थाचर कौन कला जितने सब पब्लिक सेक्टर थिला रेलवेज ही प्राइवेटाइज कर. प्लीज नोट डाउन रेलवेज कोल माइंस ही नेशनलाइज्ड जिनते पर इंदिरा गांधी कला. आर यू ऑल फॉलोइंग मी? What did she do? She went for massive privatization. Basically, if you have privatization, it will be more efficient. Are you all getting me? Efficiency. Please note down efficiency. जो कथा तो मजारे कहूची तबे सीरियसली बुझ पड़लो तो एफिशिएंट इज विल बी मोर एफिशिएंट. सो एमिति कथा नहीं जे लिबरलिज्म हाय कहले फ्रेडमैन कहले एमिति कागज रहला को बुझु तो ए जहां सब कहउचंती एउडा को सब नेता माने तांको इंप्लीमेंट करछन. आर यू ऑल गेटिंग मी? The importance of economics is that they are not written for books. गप्पा पढ़ने नहीं. They were actually implemented. Are you all getting me? They were actually implemented. Why America is so prosperous today? Why England became very prosperous during Thatcher's time?
कोल माइनर्स को बेस खुंदिला से बहुत पिटापिटी कला स्ट्राइक कॉलेज भारी माड खैले किंतु टुडे यू गो टू लंडन रिकवर्ड economically because of market theory. Are you all getting me? So it was the neoliberal ideology. Are you getting my point? Are you all getting me? So now we go to India. Chacha Nehru Bakjiba mein. So Nehru kala what a planning commission bosela 1950 re. Please note down. Planning commission was set up in 1950. But it is part of the constitution. Please note, it is not part of the Indian constitution. Some discussion hela. Are you all getting me? When there was a debate in the the Constituent Assembly, what kind of economic system India should have? Please note down this. In 1946, when the constitution was getting discussed, economic system India rakhibo. Nehru कहला we should be socialist state. Please note down. Nehru कौन थिला? Socialist state. ताकू challenge कला. ताकू challenge कला. B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar challenged him. Now let us not keep in the constitution whether we are going for socialism or capitalism. Are you all getting me? Are you getting me or not? There that we should have socialism in our preamble. Amar jo preamble bane pucho to. We people of India having resolved to democratic society. Sir पढ़ी जिंदगी. So ये जो preamble टा थिला, से preamble रे socialism वाटे को रखिया पे चाहूँ तला नेहरू. तारा पत्ता काटिला अंबेडकर. Are you all getting me? Ambedkar कहला, no. We should not mention what system we should have. We should only say that we should promote what? Core tinta katha liberty. जी कह दबो. I'll just take this. What are the three things? Morning, sir. Morning, sir. Sir. Okay, sir. 21st. Okay, sir. 20. Not there. 21st, sir. 20th is fine. 20th is fine with you. Okay, sir. I'll carry the beer. I'll carry beer. Okay. Okay, sir. Okay, sir. I'll carry chilled beer, sir. No problem. Yes, sir. Okay, no problem. No problem, sir. No problem. No problem. Okay, sir. I'll call you up, sir. I'm in a class, sir. I'll just call you up. Bye. Okay, sir. Okay, sir. This was a call from Mr. Vivek Patnaik, who is from the 1966 batch IAS. He stood first and he retired as a Director General of Civil Aviation. Okay. He's very fond of me. So, बुढ़ारा जेतबेले बियर पिया के इच्छा हो मते फोन करबा. ता स्त्री नाही मु जानि जे सारा बियर पिया पे बुढ़ारा इच्छा अछि. तेणु मु ठंडा बियर नेले जाकी जे ठंडा बियर पिए मते. बुझले सेही पैसे फोन करतला. से कहला आउ जडा आसीओ मलय मिश्रा बोली से एम्बेसडर थिला. मोर गोटे सांग पुरी रे अछि. से भी सब गोटे दारू पिया पे अछि. से दारू बेला से थिवे तांको सब जणा पड़ियो किए के सब दारू पिउछे. बुझला त. Anyway, so now have you understood, friends? So social now tell me, sir Achanti, tell me what are the three things we have put in preamble. Three things. Yep. 1 minute. Oh. Socialism came in 1976. Please note down. Socialism was introduced by Indira Gandhi. Got a minute. So socialism was introduced in 1976. In which amendment? Yeah. मतलब तीन चार question. जहाँ आपको दया सर से हो सर कहले कॉफी पिए देबे जहाँ दया आपको पठेगा
कौन थिला 76 रे सोशलिज्म 42nd अमेंडमेंट बहुत बड़े अमेंडमेंट को आर्टिकल अछि 368 ओके बहुत तो के सार पड़ी सब अमेंडमेंट अमेंडमेंट रे मु आज तक घर प्रेसिडेंट करो जो जस्टिस मान कर एज बढ़िया को चाहूँ ताले व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड I want to increase, listen to my question. Supposing I want to increase the age of a judge from 65 to 68. What is the kind of majority I require? Huh? A special majority माने कौन? What is special majority? कितने? हाँ कौन? एकदम ठीक हो चुका। 2/3 strength. 2/3 strength of what? Voting out and majority 50% the house एतिकी ता आउ कोन अछि आउ कोन अछि मु तो प्रश्न कोन पचाली what is the question if the age of the supreme court judge is to be increased from 65 to 68 तमे बढ़िया आंसर कलो जे अमेंडमेंट हो ओके सो अमेंडमेंट तमे कहलो जे आमे स्पेशल मेजॉरिटी करिकरी स्पेशल मेजॉरिटी ला 2/3 plus 50%. सिर्फ रही जो ना आओ प्लस आओ कौन कुछ करे हाँ स्टेट लेजिस्लेचर तो ratify करिवो more than 50% more than 50% more than 50% कौन कौन हला ताले देखो स्पेशल मेजॉरिटी कौन हबो 2/3 present and voting 50% should be there and more than half of the states ताल लेंगे अमेंडमेंट होगा anyway now मते को ताले preamble रे is it clear सब हाँ now you tell me what are the three things in the constitution yes somebody was saying liberty कौन justice नहीं सुन प्रथम नोट करो liberty equality and fraternity हला गोटे liberty equality and fraternity second हला social, political, and economic justice. Are you all getting me? Are you all getting me? प्रथमे कौन liberty, equality, fraternity. इटा प्रथमे liberty, equality, fraternity. इटा को part of the constitution अच्छी. These are part of the fundamental rights chapter. Please note down. They are part of the fundamental rights chapter, which is part 3. Is it clear? Liberty, equality, or fraternity, that is part of part 3. That is the fundamental rights. Second, justice, social, and economic. It is co-part. It is part 4. That would be part of directive principles. That would be part of directive principles of state policy. Now, what is the difference between the two? What is the difference between fundamental rights and directive principles? Justiciable or not justiciable. Not justiciable माने कौन तमे जाई परिवनी कोर्ट को जाई परिवनी ना कोर्ट रिव्यू करिवनी कोर्ट रिव्यू करनी एटा हमें कॉन्स्टिट्यूशन अछि किंतु सुप्रीम कोर्ट हैज बीन reviewing many of these things. Are you getting my point? So while the constitution says that it cannot be reviewed, it is not justiciable, but the Supreme Court in effect has been reviewing many cases. पूछो तो कथा प्रथम कौन हला liberty, equality, fraternity, that is in which part? Part 3. और तापरे justice, social, economic, political हला part 4. That is directive principles. तापरे कौन हला unity, integrity, and fraternity. Please note down unity, integrity, and fraternity. एटा को चैप्टर अछि एटा कोथि जे कहि दो ताको मु जानिमि जे से यूनिटी इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी कोट रहला फंडामेंटल ड्यूटीज अछि दैट इज पार्ट 4A that is part 4A it was introduced in 1976 in the 42nd amendment बुझि होला पूरा क्लियरली लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी रहला पार्ट 3
justice, social, economic, political rahela directive principles, unity, integrity and fraternity rahela part 4A, which was introduced in 1976. Are you all getting me? Now coming to the question which I was talking of, so socialism was not part of the original constitution. Is it clear? It was not part of the original constitution, but he introduced the planning commission in 1950. And the first plan, 5-year plan of India was introduced in 1951. Please note down, in 1951. In 1951, we had the first constitution. Okay. So, first plan started in 1951. We started the planning from the top. Is it clear? So, therefore, we clearly demonstrated that we are a socialist country. Are you all getting me? That we are a socialist country. Now, this continued till 1990. Please note down, this continued till 1990. Till 1990, we have been following the path of socialism. From 91, we are following the path of capitalism or a free market economy. Is it clear to all of you? Are you now following economic system ideology difference? Are you all getting me now? Okay. And centralized planning jo thila, so please note down, ये जो planning process of father है P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis was a statistician, the greatest statistician that India has produced. P.C. Mahalanobis, he set up the Indian Statistical Institute in Calcutta and also in Delhi, Indian Statistical Institute. P.C. Mahalanobis, he was the guy who introduced Mantidio Kazes. So, are you all getting me? P.C. Mahalanobis. Okay, P.C. Mahalanobis. Now, for Nehru, please note down, for Nehru, jitra copies de the backstory pay. Nehru said, public sector please note down, public sector undertakings are temples of modern India. Public sector undertakings are temples of modern India. Are you all getting me? He said, if the private sector, if the economy is managed by the private sector, they would be exploitative, they will make profit, they will not have public welfare in their mind. And therefore, he thought that if we have a public sector, it will not have profit motive. Are you all getting me? If it is a government organization, it will do public welfare. Tonka chakar rahibani. Are you all getting me? Again, an ideology. Are you all getting me? PSU, public sector undertakings, are temples of modern India. Who said this and why? The OS main parikha, public PSUs are temples of modern India. Who said this and why? Se tabla mane padibo SN Mishra. Are sir to kahidele Nehru kotha kahidele se tome chalo बोले कि सर एटा कहितला कोटा मने पुनी सरा महालनोबिस बा मार्क्स कहितला कि एटा सरा कि कहितला नेहरू बुडा कहला कि सरा गांधी कहितला कि सरा रानी होनी जरा बुझु तो कतला एम दिस सब क्वेश्चन है मेन रे क्वेश्चन है these are the kind of questions you have. Are you all getting me? Now we come to, so we are having a free market economy from 1990 economy to पूरा free market economy. So जो free market economy रे कौन टा changes है? First change है from, please note down, from control, please write down, from control, regulation. From control, in the lecture you get here, who does pen? Huh? Oh, 80 pen could be. So from control, please note down, to regulation. It also
The first change that happened, control mane नहीं सब सिनेमा नहीं कंट्रोल यार कंट्रोल को दिखतो से ना संजय दत्त नहीं कंट्रोल यार मैंने तुमको तो कहे इस तरह चुपचाप स्वयं चुप है तो that is control. Regulation माने मैंने कहबो जे ठीक अछि तमन छुटी शांत रहबो बदमाशी करिवोनी, that is regulation. Regulation means you give a certain set of instructions to people. So it is not punitive. Please note down. Regulation is not punitive. Punitive means it doesn't impose penalty. See, for instance, I'll give an example. Please note down FEMA. Keep the review over it. Huh? Achha, clear. Lekho. I'm giving an example. If somebody asks you, please explain what is regulation and what is control. 1991 purbaru, we were having FERA, Foreign Exchange Regulation Act. Please note, Foreign Exchange Regulation Act. Foreign Exchange Regulation Act kono? Supposing tame America jaucho. You are supposed to carry maximum $500. Now, if you have more than $500, buchcho to katha. If you have more than $500, so now, if you have more than $500 and you don't disclose it, you will go behind bars. Are you all getting me? Before 1991, if you are carrying more cash than $500 and you don't disclose it at the airport, you will be put behind bars. It is a punitive thing. It is a criminal law. Are you all getting me? It is a crime. But under FEMA, Foreign Exchange Management Act, FEMA, you pay a fine. Tame dhara $5,000 anucho, they discover that it is more than 500, they will impose a fine on you. 10% or 50%. Have you all? So that is called regulation. Have you understood? In a controlled regime, he will be punished. It is a criminal law. In a regulatory economy, buji bolcho? A concept no buji pale. In a regulatory economy, it only imposes fines. It will admonish you, but it will not put you behind bars. Are you all getting me? So before 1991, we had something called license quota and permit Raj. Please note down. We had what? License, quota and permit. License, quota and permit Raj. Before 1991, for any new activity that you want to start, supposing you want to start a scooter factory, you want to set up a plant, so you have to apply for a license. You have to go to the collector or the EPCOL, so you have to apply for a license. Are you all getting me? What is permit? Permit mane tame dharo konchi koi jinsa no jaucho, so require a permit. Supposing tame katha neki jaucho, so you require a permit to carry wood with you. Quota means mane dharo tame 100 kilo chini chahucho for a. So if the quota is 50 kgs, you will get only 50 kgs. But for my sister's marriage, I went to the SDO, we requested for 50 kg, so he said only 20 kg can be given. So then I said, I am headmaster's son, my father was headmaster. Oh, headmaster, another 10 kilos will be given. Okay. So have you understood?
before 1991. So what are the three things? License, permit, and quota. Now what is happening? From LQP, we have come to liberalization. Please note down liberalization. Globalization and privatization. Is it clear to all of you? What is liberalization? That means you don't require a permit. You don't require a license. You don't have quotas. That is liberalization. So everything is done as per the market forces. If it is available, you'll buy it. Are you getting my point? I still remember I booked a scooter in 1976, Bajaj scooter, 1976, when I got a job. I completely forgot about it. In 1983, when I got married, I was working in Patna. So then suddenly somebody said, "Ke sir, aapka scooter aa gaya. Permission aa gaya, so Bajaj scooter ke liye." Are you getting my point? So it was a celebration in my face. Ke sir ko Bajaj scooter mila. 7 साल के बाद. So सबने कहा कि सर शादी जो कर लिए ना, ये जो है ना बड़ा बढ़िया काम हुआ, ये जो है ना स्कूटर आया. Father-in-law did not give 1 rupee for that. I had to buy it. So what I'm trying to say, this is the kind of time that we have seen. Are you getting my point? If you apply for a telephone, landline telephone, it took me 11 years to get a landline connection in those times. So from those days, have you understood the India before 1991? को दुनिया में अच्छा बुझले कि से मोर मने अछि इंटरनेशनल कॉल करिया पे गोटे मिनिट को 64 टका लागुथला 64 rupees. So one Sardar went to the telephone booth in 76. So he picked up the telephone. Americans phone call. से जो लोक जे अच्छी से देखु छुड़ा केते समय कथा जे सब कथा 64 rupees से तळे बाबू से खाली कहला बेबे चढ़ा दी करके रखि दला. बेबे चढ़ा दी माने मां को एयरक्राफ्ट उठे देली. से भाई को फोन कला बेबे चढ़ा दी. So before this fellow could realize, he has already put the phone. से कहला साला 3 सेकंड रे कौन पैसा देबी बुझलो कि only a Sardar can think like this. Okay, so those days खाली हमें देखु तो साला कितने टाइम लागुची. Are you getting my point? So when I remember when I used to talk to my wife before marriage, you know, after it's finished, so she will like to talk because 4 minute हलाडी 20 टका हलाडी already बाजलाडी ना आवरी केते बजेबो की एबे साला किते फोन करूछ. अरे बुझी पड़छ तो कथा हां एबे साला चालीची फोन चालीची का फोन पर पाइबा इन डिफिकल्ट नो कि चाहा को साला देखिचा लागि जा फोन सब फोन रे बाचंदी. सेते मो वाइफ कथा कोनती तो एटी बंद कर फोन टा 22 टका आइ सालाडी सारी 22 टका नै कि घरु नले आसो साला सफरु नै कि आसे 22 टका नै कि आसे बुझछ त. Are you understanding the dunya? को दुनिया रे हमें थिले को दुनिया रे हम अच्छो बुझछ त. But jokes apart, this is how, so from control we came to regulation, and from license, quota, permit we have come to liberalization, privatization and globalization. माने कौन? Free trade of goods and services. Please note down. Free trade of goods and services. तमे जरा अमेरिका जीवो फ्री कहां की साथ जाउचंती कोन पय जाउचंती की किछि पचार जाउ है. Free goods and services. So goods can travel from one country to another freely. That is what we call as globalization. Globalization. Is it clear? So, बर्तमान government रो काम कोन हला. What is the job of a government? कौन लिखिछि? To create, please write down, to create an enabling environment. To create
what? An enabling environment for private sector to flourish. So private sector are now the temples of modernity. Nehru Chacha Samayare, public sector undertakings were the temples of modern India, but in the India that we are talking of, the private sector are the temples of modern India. Shahrukh Khan dance kuruchi, Salman Khan dance kuruchi. यार बाहर देख लो सब dance किंतु कुरुची सब सिकरी. ये रणबीर कपूर कुरुची. देख लो ना नहीं वीडियो रे. So government took care. Are you getting my point? Earlier, the government create jobs. The government will set up factories. Now, private sector firm ताकू जरा आसीबो ताकू टे चा दियो, कॉफी दियो, दारू दियो, प्राइवेट सेक्टर को तमे वर्तमान होची प्राइवेट सेक्टर को यदि मालिश कलो ताले देश उठियो. ये होची बुझि पड़तो तो एई होची चेंज हला 1991 से. Is it clear to all of you? So now let me clear this. Okay. Yeah, tell me. कोडी क्लिक रे एटा को अच्छा चेंज बुझी पड़तो तो. Now we come to a few concepts. Please note down. So after we understand a few concepts, we will look at a few concepts. A concept रे गोट देखिबा में stages of economic growth. Please note down stages of economic growth. Measuring growth and productivity. Please note down. आमे वर्तमान concepts को आसीबा हैला. प्रथमे तुमको कहा गला जे देशटा कोन केम झाला त ग्रोथ हबो आज केते इंडिया ग्रो करियो बोली फोरकास्ट करछि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. has anybody read papers? How much India केते ग्रो करियो 24-25 रे. IMF today has come out with a prediction केते 5 आउ एमटी कले लड्डू खाई करी एडे एडे लड्डू खाई करी आसी से को सारे एटू बाहर तो 7%. Please note down IMF ର prediction हला जे India will grow at 7%. 5% की कहला सार कहले कि सार कहले तो ए सार कहले तो 5% बढ़िबो चाइना रो. सार होची चाइना कथरा कहले सार चाइना एक्सपर्ट तो सार चाइना रो बड़ एक्सपर्ट तो सार कहले 5%. बुझছো तो IMF प्रोजेक्शन हला केते 5%. इंडिया हला 7%. हमर प्रोजेक्शन 7%. सो हमें तीनटा कथा करिवा हला. ताप देखिबे जो लिबरलाइजेशन हला. प्लीज नोट डाउन हाउ वाज लिबरलाइजेशन इंपैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी. एटा जाना ना नहीं. दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स. So course आसीबो what is liberalization and what is the impact of economic liberalization on India's. Please note down this question. What is economic liberalization? What is economic liberalization? What has been, please note down, what has been India's experience in growth, what has been India's experience in growth and development? In growth and development. Development माने कौन की वो कोई भी मतलब development माने कौन सा? What is development? एटा इंदु का हेले रे. Growth और development. जी बताइए डिफरेंस टा कही दबो मु जानिबी से दादा प्लेट. ग्रोथ आसला तमरो लेखो जीडीपी. क्वेश्चन टा कोन देछि व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. What has been the impact of economic liberalization
on growth and development. हैला एटा तमे शुक्रवार दिन समस्ते 200 रु 250 वर्ड रे लिखि के आंथि कागज हैला तमे नेट पढो तो किछ असुविधा नै जे सबटु बेस्ट आंसर हबो ताकू गोटे कोन दिया जेबो थोड़ी ताली दिया जाता ताली हैला so growth rate GDP gross domestic product are you all getting me growth rate plus saving and investment please note down saving and investment growth rate plus export foreign exchange reserves please note down credit please note down when we talk of growth we are talking of 5 things what are the 5 things GDP saving and investment export foreign exchange reserves our credit and saving आमे तो कहूचे जे इंडिया इज ग्रोइंग आमे तो कहूचे इंडिया ग्रोइंग टाडी पकला 5 ट्रिलियन कर दला 10 ट्रिलियन कर दबो अमेरिका को फोपाडी दिगरी पैसिफिक रे फोपाडी पळे आसीबो बुझलो तो ये जो ग्रोथ कथा कहूचे से ग्रोथ रो 5टा अंगुली growth has 5 things but in so as a I thought I'll just give you as a tip सब जेते तुम पढुचो पाठ if you have to remember points please reduce them to 5 points 5 fingers my father told me that anything you want to say तुम भाबनी 10टा पॉइंट हेतिले तुम 10 मार्क हितो ना से 5टा पॉइंट जदि ठीक ठीक लिखियो तुम समान मार्क पाइ दिस इज अ गोल्डन लेसन फॉर एवरीबॉडी जो आमे कुछ पॉइंट छाड़ी गली सर से पॉइंट छाड़ी गली सर मुतिया को यदि भूली गली सर पॉइंटटा किछ लाभ नै 5टी पॉइंट दबो से 5टा पॉइंट कोन पॉइंट हला जीडीपी रखो थैंक यू जीडीपी तापरे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तापरे एक्सपोर्ट आउट ये हला ग्रोथ ए जीडीपी ग्रोथ कहूची आईएमएफ केते हो बोली 7% ठीक है लिखि दियो फिर ये बहुत बढ़िया बढ़िया कथा तुम के कहबे हेलो तो जीडीपी होचे 7% इज इट क्लियर फॉलो ए जो जीडीपी कहूची 7% बोली what is the maximum GDP growth India can have please note down हमें सेटा कहूचे पोटेंशियल जीडीपी एटा हला पोटेंशियल जीडीपी हला एटा हला एक्चुअल जीडीपी इज इट क्लियर to all of you when I am saying growth will be 7% I am talking of actual growth some would say could India capacity be 7% nahi sir our capacity hochi potential GDP hochi around 10% please note down this is very important you are getting me or not तो तुम कहो सर मो 80% करूची what is your potential नाइ सर मो 90% पाइ मो 95% that is your potential जदि हमर पूरा इकोनॉमी रे everybody would have been employed all resources would have been employed we have the kind of technology of America हम 10% are you all getting me so go GDP बुझि पड़छो कि नहीं तो पूरा एकदम बुझि पड़छो कि नहीं तुम ना बुझि पा not difficult होछ so GDP can be both actual the other is now saving हमर भारत में केते सेविंग होतो कहला saving as a percentage सब मन please all parameters we say with a reference to GDP savings as a percentage please note down saving as a percentage to GDP धर भारत रो धर 100 टंका हला GDP let us see GDP of India is $100 trillion let's if the saving is $30 trillion so we say saving percentage is 30% is it clear 100 टंका तमर the total GDP हला if the country as a whole is saving 30 rupees so we say saving percentage is 30%. Is it clear?
अरे बुझु कि नहीं कष्ट होउची कि कष्ट कोन पे होउची तुम 100 टका जे 100 टका तो 30 टका सेव कर दैट इज योर सेविंग ना supposing you earn about 20,000 rupees and you say save 2,000 rupees what is your saving percentage 10% are you getting my point so for yeah tell me terms of तो लगी ठीक है ना न असले केमते हबो और तो बाकी सब उड़ाले बाकी हम सब बुझि परछो तो so saving as a percentage of gdp हला तमरो total value of goods and services we come to that we will define gdp are you all getting me we will define gdp ता कोन हमें करिवा बुझि परछो तो अरे are you all following me or not जीडीपी कहे तो मते पूछ सर कौन जीडीपी खाली होचंती मोदी वालिया आर यू ऑल गेटिंग मी जीडीपी बुझी हमें जीडीपी कोन हाउ टू बुझी दबा एबे पथर बुझदबा टिके देखो जीडीपी इज इक्वल टू प्लीज राइट डाउन सी प्लस आई प्लस जी प्लीज ऑल नोट डाउन व्हाट इज जीडीपी जीडीपी लिखो लिखो इतने सहज कथा नु इकोनॉमिक्स रो इतने सहज कथा नु बुझले कि तब काहे कि प्रिंस ऑफ ऑल जो आर्ट सब्जेक्ट कोंती काहे कि सब इंजीनियरिंग पिला फिजिक्स पिला आजकल साइंस इकोनॉमिक्स को जाउछन इकोनॉमिक्स सीट पाइबन तबे दिल्ली स्कूल 97% रे मो पो पाइल था दिल्ली स्कूल रे आर यू गेटिंग माय पॉइंट So economics has become a fancy subject because it has very interesting concepts, very factual. बुझी पड़ो ना नहीं सब कथा GDP is equal to what? C. What is C? देखो C है ला PFCE. PFCE चला private please write down private final consumption expenditure कौन टा कहली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिते अच्छी गो गथ अच्छी उड अच्छी काटिक आनल दैट इज नॉट जीडीपी काटिकी तमें सब वुडन प्लान कल that is an intermediate good please note down good is of three types please note down good is of three types लिखो goods माने कौन जो goods and services सार मत कहले जो goods and services goods माने कौन goods हला final goods बुझो तो ए जो कॉफी पी रही हूं it is a PFC कॉफी जीडीपी कॉफी टा कन्वर्ट into कॉफी हला सेते बेला PFC are you getting my point बुझी पड़ो प्रथम है प्राइमरी गुड कॉफी सीड है प्राइमरी गुड ताकू कॉफी पाउडर दैट इज इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड कॉफी प्लीज नोट डाउन बुझी पालो ना कथा हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द फाइनल गुड गोटे है प्राइमरी गुड गोटला इंटरमीडिएट गुड आ गोटे है फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट हैव यू अंडरस्टूड in the GDP एम सब क्वेश्चंस पिलांगु पचारि एथरा जो लास्ट गोटे पहला दीटा ओएस पाइतले ताको चेयरमैन ओपीएससी पचाला व्हाट इज पीएफसी तो पचाला सीसा ट्राइबल प्ला कहला से करा तुम की पाठ पढे छी कहला सर बते कहला ओ सर पढे छी तुमको से जे थिला आईपीएस अफसर से मोर डायरेक्ट स्टूडेंट थिला हम बुझलो तो से जानि दिसा गाड़ी गाई छी मोटो पीएफ बुझ बुझो तो पीएफसी कोन हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज पीएफसी प्राइवेट फाइनल consumption expenditure ए जो टेबल टा होची पीएफसी रे আছে this table this bag be PFC that घड़ी be PFC that shirt be PFC but not जो cotton cloth not say button muha are you all getting me so in GDP we take only final consumption of goods have you understood ए वाला क्वेश्चन तुमको पचारिए Question asibo C is equal to final consumption of goods, intermediate consumption of goods, primary consumption of goods. माने पड़ा से ये बते कौन ना तो है नहीं था तो दूर तो C is not consumption. Consumption is final consumption.
व्हाट इज आई माने कौन इन्वेस्टमेंट कहार इन्वेस्टमेंट प्लीज नोट डाउन आई पी प्लस आई पी आई गोटे हला investment can be by an individual, investment can be a businessman, investment can be private, investment can be by a business person. तमें गोटे सिले दुकान कल गोटे छोट में स्टार्टअप कल दैट इज ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन स्टील प्लांट हला बुझी पड़छ तो so investment is what it is a total of private investment and public investment is that clear acha g hela government expenditure बुझी पड़छ कौन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखो व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे एंड अलाउंसेस जो सब चाकरी करछंती जो खंटोड़ा सब चाकरी करछंती सरकार चाकरी करछंती तांकर सैलरी पेंशन लाइक मी दैट इज जी बुझी पड़छ तो जो पेंशन पहुंची जी डिफेंस लिखो डिफेंस paramilitary forces and subsidy कौन कौन हला पे एंड अलाउंसेस प्लीज नॉट पे एंड अलाउंसेस तापरे पेंशन डिफेंस paramilitary forces बीएसएफ डिफेंस और paramilitary forces अलगा आर्मी नेवी एयरफोर्स और paramilitary forces तापर लास्ट हला सब्सिडी माने कालिया स्कीम रे 5000 टका दउची नवीन बुझु तो these are called subsidy paramilitary border security force CRPF Tibetan force एरा सब paramilitary forces railway protection force भलो क्वेश्चन पछा तो ताली मार सब तो भाउछ रे मूर्ख बोली बढ़िया कथा पछरे पछाला तो किछि जानो दिलो की के आसो सो की के paramilitary forces रे हला BSF, CRPF, Indo-Tibetan Border Force, Railway Reserve Force. Okay, ये सब रे मध्य ठीक है देखुतुवा पेपर रे मोर दीटा स्टूडेंट ये जो पाई गले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से पाई गले BSF रे पाई गले और एनडी रे तीनटा खंडे पिला CRPF पाई गले सेमानो परीक्षा रे एग्जैक्टली भलिया से जो कथा पचारली नहीं से भण कथा पचारची से त बढ़िया तो इतरे पाइबा इजियर देन गेटिंग इनटू द एनडीए ओके. So what is GDP? GDP is equal to private final consumption, all of you private final consumption plus private businessman investment and government expenditure. Government expenditure कौन असला तुम कहला से न देखि का को government expenditure कौन असला हां और डिफेंस आउ सब्सिडी कहि छ बहुत तो ताली गोटे मारला बहुत सब बुझी होचे सब एबो बुझी ए हला जीडीपी आर यू ऑल गेटिंग मी दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जीडीपी व्हाट इज जीएनपी जीएनपी इज इक्वल टू प्लीज नोट डाउन जीडीपी प्लस प्लीज नोट डाउन जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम तुमको जहां पाठ पढ़ुची तुम 4-5टा क्वेश्चन तुम ही जान दो ओएस रे आईएस रे 5टा तुम प्रिलिमिनरी क्वेश्चन ही जो एई उड़ा तो आसो तुमको जो पढ़ौची दिस इज विथ अ व्यू दैट यू आर एबल टू आंसर योर प्रीलिम्स विदाउट एनी डिफिकल्टी आर यू ऑल गेटिंग मी तो वाले सेठी बस सर जीडीपी का कौन सर जीएनपी का कौन जीएनपी इज इक्वल टू व्हाट इज एक्स export. What is X? Or M? Import. What is X? What is M? X minus M टा कौन कौन थी जे कह दो से 100टा पायो को ए भलो प्लेट है हां जब एक एला वाला चांस अछि 100टा मोर ये को कौन X minus M?
ନା ଏଇ ଟିକେ ଅଲଗା କଥାଟା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଗଲା, ଏଟା ତ ଗୁଇ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ତ କହନ୍ତି balance of trade. Please note down balance of trade. It is called balance of trade. What is it called? Balance of trade. Is that clear? So GNP hela kono tomoro GNP hela kono कहलो GDP plus which explanation माने कोन का माने balance of trade. Balance of trade. Okay. Now, so growth rate में बुझिलो वर्तन GDP का बुझिलो, सेविंग इन्वेस्टमेंट बुझिलो, एक्सपोर्ट बुझिलो, एफी रिजर्व बुझिलो और क्रेडिट एंड सेविंग बुझिगलो, एक्सपोर्ट तो सब। अरे फिर तुम बुझिलो ना नहीं सब। Are you clear or not? Now let us go to कष्ट हो टिके किछि नहीं तो आरंभ हला एबे तो जो संडार घंटा माइला रे बहुत बहुत पछा छ मंदिर बहुत जगन्नाथ बहुत भीतर अछथि एबे से बाहर से चक्कर मरा होछि बुझले कि से जो पांड्यान ने की बुलौतला से बाहर बुलौछि से बे जम्मा जाय ना बर्तमान मु ताको पसेबी तुमको डेवलपमेंट हला डेवलपमेंट कोन आसला डेवलपमेंट इज नथिंग बट ह्यूमन डेवलपमेंट तमरो पाठ साठ तमरो हेल्थ तमरो न्यूट्रिशन sanitation, these are all called development, human development. So human development, please note down, is captured by an index called HDI. Human কি করছিলা কিনে তুমি একদম ঠিক আছে यूएनडीपी কেবে করছিলা এটা স্যার कहो ना भल पिला तुम अच्छे बहुत बढ़िया केबे करथिला कहि दो पैसा खाइला बेला तो लागु तुम कोर्स तोर सब्जेक्ट कोन ग्रेजुएशन रे केमिस्ट्री यूएनडीपी करथिला केबे 2000 प्लीज नोट डाउन एंड दे ब्रिंग इन अ रिपोर्ट कॉल्ड एचडीआर यूएनडीपी एकदम ठीक कथा कहला 2000 रे गोटे एचडीआर बोले बाहर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आज घर को जाइकरी लैपटॉप रे ठीक है एचडीआर देखियो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पूरा रिपोर्ट पढ़ा दरकार नहीं कौन तारा ट्रेंड मेनली ट्रेंड अच्छी कल देखा तमें खाली बाहर देखिबो मु तुम भितर पसी हैव यू अंडरस्टूड तमें खाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो आई विल टेक यू इनसाइड but you should not be clueless when I am so HDI ta ki बाहर करथला सर इंडिया जे concept ता अमर्त्य सेन प्लीज नोट डाउन अमर्त्य सेन हमर इंडिया जो अमर्त्य सेन एई सार एटा को बाहर करथले ये सार एटा को बाहर करथले किरे कहीं पेन काम करनी कौन था एबे ना अमर्त्य सेन प्लीज नोट डाउन अमर्त्य सेन 1999 रे एचडीआई कॉन्सेप्ट बाहर करा प्लीज नोट डाउन अमर्त्य सेन डेवलप दिस कॉन्सेप्ट इन 1999 सी कहला if you want to know the real condition of a country by growth 7% हला कि 5 ट्रिलियन हला कि सेविंग 30% नो डोंट गो बाय दैट यू गो बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर कौन कौन से रहइबो प्लीज नोट डाउन एसडीआई रे कौन कौन रहइबो इन एसडीआई कौन कौन रहइबो इज इक्वल टू पर कैपिटा जीडीपी प्लीज नोट डाउन ए गुडा का सब तमरा आसीबो ए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लीज नोट डाउन मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग देखो एसडीआई will depend on 3 parameters. What are the 3 parameters? Per capita GDP, life expectancy, and
mean years of schooling. What are the, please write down, mean years of schooling. Average schooling in your country. तमरो जो average school, जो लोगों का जो average schooling निया जीवो, is it 6, is it 7, or is it 12, or 10? So the higher the mean years of schooling, the better is the country. There America, बुझी पड़ो चलो नहीं. America mean years of schooling is 12. मेरा भारत महान रहूची 6. पूछो तो. अरे are you all getting me? अरे भारत रा average schooling year है ना 6. On an average, people are less than 7. 7 रो कम. An average, if you take the average, in America it is 12 plus. That is why it is a developed country. Life expectancy in India is how much? Please note down, 69. Is 69. In most of the developed countries, it would be around 80 plus. Come on, 10 वर्ष अधिक. सिर्फ 10 वर्ष परे मरिबे. मते 69 नहीं छी, ठीक एई वर्ष मोरो एवरेज हिसाब रे खसिया कथा. किंतु सरा खाई पी के अछि ठीक ता चलियो 5 वर्ष चलियो गाड़ी. हां हां कोन इंडिया लाइफ एक्सपीरियंस को वेली 16 पे वेली 69 most of the developed countries it's 80. बुझी पड़छो हमरो mean years of schooling हला 6 आउ तपरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हला 69 and per capita income हला $2,400. अमेरिका केते हला जमा 42,000 हला. लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 सेट हला 82. मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग हला हमरो 6 तांकर हला 12.5. बुझी पड़छो तो. सो ता एसडीआई स्कोर लेखा प्लीज नोट डाउन. एसडीआई स्कोर इंडिया हला 0.64. एमन का स्कोर हला 0.94. Please note down. Very important statistics I have given you. What did I tell you? A country's progress is not to be judged by growth, but by its development potential, by its development parameters. And we measure development through what? Human. लिखी दो, line में लिखी दो. A country's progress is not to be determined by GDP growth, but by HDI score. But by HDI score. कौन कौन ग्रोथ अंडर আছে? हाँ. Not necessarily. तुम्हारा education टा खराब होता है तो it will come down. So please let me complete this sentence. हाँ लिख लो पढ़ हाँ पूरा गला. Let me complete this sentence. हाँ. HDI scores which comprise of per capita GDP, which comprise of what? Per capita GDP, life expectancy, and mean years of schooling, not minimum. Mean years of schooling. Somebody would have messed up. Mean years of schooling, not minimum. Mean years of schooling. The average level of schooling. Average mean years of schooling. So India's HDI score is 0.64. तमाने एक रु तमें 64 पाइच. 0.64 have you understood? From a score of 1, if you are getting 0.64, then what is your score? You are getting 64. And how much America is getting? 94.
Are you getting my point? Most of the developed countries have a score of more than 90. Whereas महान टाइप का जो जाम्बिया, इथियोपिया जैसा बदमाश सब जो भूखे मंगे सब लोग हैं, इनके स्कोर है 60+. Have you understood the difference between growth and development now? Have you understood the difference between growth and development? So when you are talking of growth, so life expectancy and health, mean years of schooling and education. So what is critical for a country? Education, your healthcare, and your per capita GDP. So when we are saying that Dikshit Bharat, we have gone to the 5th position. So as per Dikshit Bharat, our GDP score, we are now 5th. Please note down. GDP score में कितना है? 5th world rate. GDP, total GDP rate. Per capita score में कितना है? 123. HDI रे कितने अच्छे? 124. Please note down. Have you understood better? Overall GDP कितने अच्छी? Score कितने? 5th. Per capita GDP score is how much? 123. HDI score is 124. Are you getting my point? So therefore in India, there is a dichotomy. Please note, please write down the last line. There is a dichotomy between what? Dichotomy mane buझ parcho? Farak rahichi. Dichotomy mane dichotomy. Farak. Difference. So there is a difference between growth and development. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? बुझिए ना कि बुझी पालो कि नहीं? हाँ को हाँ कौन कहना? Dichotomy is difference. There is a difference. मैंने तुम्हें healthy का था तो गधा ही पाएगी. सब बड़ा हुस्टो सब गधा सलमान खान का गधा. बुझे तो? So growth and development. मैंने you may be very rich, but you can be completely dumb. Are you getting my point? So growth and development is like that. So when we are talking of Bikasit Bharat, so that Bikasit Bharat has to be a developed India. Are you getting my point? So if your per capita income is very low, कितने देखो तो कितना low difference पूछो तो? अरे are you following me? मैंने अमेरिका रे जितना सा जो भंडारी आसीबो से ता गाड़ी रे आसीबो ता गाड़ी रे से आसीबो मु जो जाउची तो सैलून को जाउची से बारंबार कहूची सर मु एसी किनी बोली 6 वर्ष सारा से बैंक रे लोन पकुची लोन पाउनी पैसा 40,000 से करी पर सेठी सारा गाड़ी ने के हेलो करके से तार काट के सारा $50 ने के तुमको लंडा करी से गला से बुझलो सो आर यू सो नाउ एटा को सफा करी क्लीन हां बुझी गला बहुत इंपोर्टेंट. अच्छा तुमको कौन पढ़ले प्रथम पढ़ले जे हमें न्यू लिबरल इंडिया पढ़ले तापरे हमें विल सी stages of economic growth. Please note down stages of economic growth because they are all part of your syllabus. Stages of economic growth. Stages of economic growth is the name of the book. Is the name of the book by W.W. Rustow, S-T-O-W. Preliminary question आसियो. The stages of economic growth टा किए लिखिची? मिडल लिखिची, कि नितिन देसाई लिखिची, कि अमित तसे लिखिची, कि W.W. Rustow लिखिची. Rustow करो. बुझी बोलो तो कथा. एटा ना तुमको इतने कोची कारण ये सब क्वेश्चन आसियो. बुझे तो? बड़ा बड़ा लेखो बड़ा कष्ट लाଗୁଛି कि बड़ा कष्ट लाଗୁଛି ना? मजा लागुनी? मजा लागुनी? काहे कि मजा लागुनी? तुमको मजा लागुनी? ना लागुनी? नि कष्ट लाଗୁଛି? नहीं honestly को. Are you all following or not following? अरे सोशलिस्ट जो भावनी जे इकोनॉमिक्स बुझी परिबे नहीं. See, have I been able to explain the terms to all of you or not? GDP बुझ पासो नहीं? GNP बुझलो कि नहीं? HDI बुझलो कि नहीं? हाँ? HDI संगे आउ गुटे लिखि दियो, ए लिखि दियो.
GII. Please note down. Another measure of development. Question as you another measure of development is GII, Gender Inequality Index. Gender Inequality Index. Gender Inequality Index mane what is the score for women compared to a man in the society? Are you getting it? Supposing we want to know how equal is India in terms of gender. 80 पूरा GIS कोटा बढ़िया अच्छी. So supposing 80 जमा तीटा जियो थांते सब को थांते. So gender inequality index should have been very high. Are you getting my point? So the lower score, the better the country. Are you getting my point? Please note down. The lower the score, gender. अरे inequality जो भी कम हो उसे better लोगे. For instance, in Sweden, India, it has some of the best country GI. Hela. Here score hela 7%. मेरा भारत महान स्कोर हला 53%. जमा कथा होनी पूरा ध्यान दे सर पूरा ना फसियो पूरा एकदम. Please draw this diagram, draw this table. We are trying to explain. बुझी उतर नहीं. कौन कोई तली? Concept, data, and interpretation. मणिपुर जी, प्रथम क्लास है. Concept, data, and interpretation. Concept, Brahma, Vishnu, Mishra. Concept, data, interpretation. तो कुछ ना नहीं. सब वाला मुझ पूछूची से वाला पूछूची नहीं. तो सेट हले ना नहीं मुझे कथा है. हला GI हला कौन? GI हला we are trying to measure to what extent women are unequal compared to men. कौन पैरामीटर से रहिबो लेखो. प्रथम पैरामीटर हला maternal mortality rate, MMR. एटा सबु केवल प्रीलिम रे आसीबो. एटा सबु प्रीलिम रे आसीबो. आईएएस प्रीलिम रे ओएस सबु ते आसीबो. जोरा सार पढ़ुचंती सब प्रश्न आसीबो. जो पिला ताको भलगिरी पढ़ी गला से मारी गला. ओ सिकंदर है. जो पढ़ लिया वही सिकंदर है. ताको कटेबार के नहीं आउ. कौन बुझो तो आमे जो परीक्षा दबेन जाउथुलु आमे 4 of us when we were going to the examination we never had any doubt जे हमर लिस्ट रे ना अछि कि नहीं. कोठी अछि लिस्ट रे ना. Are you all getting me? That should be your confidence. कोठी क्वेश्चन अछि सर 60 है ना 32 बोले होतले फास्ट बोले होतले मु. Are you getting me point? किमिति होतला because of thorough preparation. एकदम thorough preparation. ए बहिटा को इकोनॉमी सब्जेक्ट ऑफ द पानी करी पी दे जिमो मोटो 60 मार्क केही नहीं परिबे. 100 रो 60 100% आसी. 100% आसी. There is no question जे आसीबो नि कहि सर डाउट मत होची. डाउट मोड किछि नहीं. No doubt. What is MMR? Maternal mortality rate. What does it mean? How many mothers die while giving birth to a child? Please note down. What is maternal mortality rate? Mothers are dying during childbirth. So, 8 per 1 lakh naba. Per 1 lakh. Sweden rahuchi 3. भारत rahuchi 123. बुझी? Out of every 1 lakh Swedish women, only 3 die due to childbirth.
In India, it used to be 197. Now it is 123. We should hang our head in shame that we have such a high maternal mortality rate because we just don't care for maternal health of poor women. But this is not the case in every state. In Kerala, it is only 23. In a state like Kerala, it is only 23. So wherever Himachal Pradesh, it is only 20. I went to Himachal Pradesh to study sa kale kemti hela. Odisha is 140. नवीन पटनायक 140 कोची मु सरा माने नारी को बहुत उठे दी एकदम पूरा एकदम नारी को टेकी के रख दी एकदम शक्ति नारी शक्ति करची 140 लोग मरुचंती. In Himachal Pradesh, I tried to study. So Himachal Pradesh ta kim dhala? So they have purchased a number of ambulances. आओ जो स्त्री लोग को जानिले खबर मिला जे याको she is in the family way, so they look after her in terms of diet. So from 200, it is now 23, 24, 25 in Himachal Pradesh. Bihar, मेरा भारत महान 200, 200. बुझी पड़ो तो अरे डेवलप और अंडर डेवलप टा कथा किसी बुझी पड़ो नहीं. विकसित भारत रा बुझो तो केड़े सुंदर विकसित भारत रा बुझो तो केड़े सुंदर मैटरनल केयर. आउट लेखो पैरामीटर लेखो IMR लेखो infant mortality rate. Please note down. Again a development parameter. Infant mortality rate. How many children are dying out of 1000? कितने टर्म्स होची बुझलो ना नहीं तो नाटक कौन खोले ठीक है तो ना इना इप्सता ओके MMR टा बुझी गलो. IMR is again a development concept. Please note down. IMR is again a development concept. IMR hela infant mortality rate. That means how many children are dying during childbirth. Out of 1000, how many children are going? Can you tell me what would be the number in Sweden? Any guess? 1000. 4. Sweden रे बाबा इतना कौन हो? 4. Sweden या 4. भारत में कितने? 43. Are you all getting me what I am trying to say? मोदी भक्त जति सब अच्छो सबू टिके देखो डाटा उठे टिके देखो मो जुआडे जाए बुझिल तो मते डाकंती एथि पे खाली डाकंती डाटा टा रहिबो को बुझिल तो how many children are stunted? What is the meaning of stunting? अरे can somebody tell me what is stunting? तुमको बुझिल तो इते बहुत भलो आईडिया थिला तमर आज ई कथाटा बहुत मन दुख होला बहुत मन दुख होला এই जो तुम स्टेटमेंट रे एते मोर मन दुख हला कहबार मु भाबती था बहुत बुधिया पिलाटा बोली तो काउ गो खाए नहीं जो करने नहीं स्टंटिंग माने लो हाइट पर एज लो हाइट फॉर एज 100 वर्ष 4 फुट 4 इंच 6 इंच 24 वर्ष बयस 5 फुट 2 इंच. Have you understood? Low height for age is called stunting. In India, 33% children are stunted. Kahinki? Malnutrition. Please note down. Malnutrition and poor sanitation. बुझो कथा अरे आर यू फॉलोइंग मी और नॉट ये जो स्टंटिंग है prolonged deprivation of food, prolonged, not एमिति नहीं जे काली खाइनी कम खाउची रात रे खाया को नहीं क्षीर पिउनी अंडा खाउनी माल न्यूट्रिशन है कि 5 फुट है कि बाहर छी तो बुझे तो
सेटा को सुनील गावस्कर भी भावनी कि सचिन तेंदुलकर भावनी किंतु नॉर्मल तुम देखियो ये जो ट्राइबल पिला मु जाऊ पाठ पढुची कार हाइट उठे 5 फुट 1 रो अधिका नहीं 5 फुट कुटे अंडा खाले अंडा सर अंडा अंडा क्षीर अंडा किछि नहीं चूड़ा कदली खा सका कौन खाऊच ना चूड़ा चीनी खाऊच मुझे कदली खाऊ चाली तो चूड़ा कौनटा हम स्टंटिंग हम नहीं मोटा हम मो भाया अरे बुझी पार्छ ना नहीं आर यू ऑल फॉलोइंग मी so this is again IMR is very very high अच्छा GI थर्ड टा कौन कहूंगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन प्लीज नोट डाउन GI रे कौन आसीबो GI रे कौन आसीबो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो नाटा कौन बोलबे दीपंकर देवासी सो भलो पिला तमे डोंट वरी labor force participation that mane what is the percentage of girls who are working and what is the percentage of men who are working please note down labor force participation la what is the percentage of women who are in the workforce what is the percentage of women in the workforce what is the percentage of women in the workforce bharat re kete 27 27% women are having a job, whereas men, it is only 71%. बुझी पड़ो तो difference है बुझी पड़ो चाइना रे एटा होची 67 आइटला 71 चाइना रे तमे ट्रेन जीवा कम होतवे सब झियो को भर्ती Bombay you will find a large number of girls and boys, men and women. So are you getting me? LFR bujhne to? LFR in Sweden would be about 65 and in India as I told you is 27. Bujhi porcho? Last hela representation in parliament. Please note down representation in parliament. Representation in the parliament. That means what is the percentage of women in the parliament? Have you understood? What is the percentage of women in parliament? India kete 13, 80 hochi 41. बुझुचो 13% स्त्रीलोक सेठी अछंती स्वीडन अछि. So what are the three components of GII? MMR, LFPR and representation in parliament. कौन कथा बिल्लो? Representation in parliament क्या कहूची? So that is how their voice will get a prominence. जे स्त्री लोग को कहि आसा इते होची तमे सला रेप करी चाली गलो तार किछि होन त माडो होनी हम कोनी से कहि मोदी पार्टी सला लोक नांदी से जे कहिबा लोक सला स्मृति ईरानी ताको हरा दिलो तमे LFPR बुझु तो. So one measure is HDI, out measure hela GII. This was developed in 2005. Please note down. HDI came up in 2000. GII came in 2005. GII came up in 2005. Are you all getting me? When we are trying to compare, so India score kete 53%. I mean, इतने बढ़िया देशटा, ये बढ़िया देशटा सला स्त्रीलोकों को सला खाली अलगा करी बसाओ, मुंडिया मार, डालिट आने, चा कलु की नहीं कि ओढ़ना कहेंगे दोनों, एमती ओढ़ना देखे जानती समय, मैंने मु ओडिशा असला परे, somebody asked me, I left Odisha in 76, I came back in 2012. So somebody asked me that what is the change you have found in Odisha amongst women? Because बहुत स्त्री लोग देखिले स्कूटर फुटर जाउछन्ती किंतु पुरा को जहां तक तोलतोलात करूथिले सेमती सोसाइटी अछि. Odisha continues to be a very very traditional orthodox society. स्त्री लोको केमती सा रगड़ेबा आगरे सला पिला जाउथो सला स्त्री लोको से बाक्स धरि चाल पछे चलता
So attitudes are horrible, horrible, absolutely horrible. I mean, I feel very anguished when I see this state. It is. I'm very happy to find so many of girls studying here. Okay, that all of you are there. You are so badmasi kara. 80 तमरा GI is zero, zero. किंतु कान को चली जीवो GI. What a horrible situation. But a Parimon Mahapatra na शुणी थी ओडिशा रे थिले आगरू. Parimon महापात्र होचंती मु मामू पो भाई, निज मामपो भाई. बुझलो तो Parimon महापात्र. भारी फुटाणिया देखो. इत्ती सळा फुटाणिया आ कहना. सी दिने कोन हला मु तो स्त्री बाहाई थली. आमे तंग घर को जाइथिलु. मो स्त्री सळा हाईली मॉडर्न स्त्री लोक सळा बाळ कटा से माने अच्छा लोक को से टिप मार दवा लोक से तंग नमस्कार कर देला. सी एंग्री मो ससुर कहले कि अपन जानते अपन झील किते अहंकार मत मुंडियाटे माइलानी. मो स्त्री कहला माई फुट मुहरे मारबी सला जोता धक्को बुझले ना. सो किंतु से भाबुची समत्व सामने बुझले कि तो इज अ हॉरिबल स्टेट. इट्स अ हॉरिबल कंडीशन फॉर वुमेन. तुम माने सब यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ इट. ओके मु समस्त को शिखेची मो बहु संगे मु बियर पिए एकदम पूरा एकदम दोस्त एकदम. तेणु वी हैव टू सुखी इनइक्वालिटी डेवलप केते हबो पछर कहूनी केबे डेवलप हबो ए मुंडटा जळे हबो सेतळे कि डेवलप कर को आसे चा टी बना. अरे तमे जाउनु टी चा टी तमे टी चा बनी कि तो ओनो चाटा दीचरो ऑफिस वासले ताकटी चा बनी कि दोउनु काई हां कि जल्दी बासनटा माइस काना हो जल्दी दियो ना. जल्दी जने गेस्ट आछंती ताकू टी करो तमे जाउनु साथ के जायकरी कि करनो. So A so कौन डेवलपमेंट रे HDI. How the last lekho please look up. So development रे कौन आला. How do we measure development through HDI. HDI रे कौन रहला. HDI रे कौन रहला. Health, education and per capita income. और GI रे कौन रहला. देखो नहीं खाता न देखरी. Very good, very good. Last parameter for HDI for development hala. Last parameter for development hala. Please record MDPI. Multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index. बेटा बढ़िया कथा कहला एकदम MDPI. Poverty माने कोन. Poverty line गोट रहिछि. There is a poverty line. Poverty line माने कोन कि कहि परिबो. जे जो माने सबो. Can somebody tell me what is the poverty line in India now? के सर कोन हला सर. नहीं पर कैपिटा इनकम सर अपन गोली मारंतु नि एकदम मु कोन कहल प्रथम क्लास रे. Either you know it in economics or you do not know. Either तुमको जाना और जाना. इतरे किछि तुकार किछि काम करियो नै. पर कैपिटा इनकम हला इंडिया सो रूरल 45 रुपीस के. अर्बन एरिया रे इज 54 डे. रूरल एरिया रे और अर्बन एरिया रे 8 टंका रो for 54. Please note down. Please note down. There is a poverty line. This is called poverty line. Again, a measure of development. Please note down. Poverty line. Are you all getting me? HDI, GII, MDPI, poverty line. Poverty line. Which one? Poverty line. Poverty line hala in India. What a Tendulkar committee hitla. Lekha Tendulkar committee. In 2011. Se mane कहले 2011 से मैंने कहले जे 45 rupees in rural area per day. How much? 54 rupees in urban area. And they estimated that about 24% of India, please note down, 24% of India are below the poverty line. In a bujla, 24% people are below the poverty line. Again, it is a measure of development. जो BPL कौन थी? BPL कार्ड कौन थी? It has a BPL. जो BPL कार्ड होची, BPL कार्ड को
এই সব চাউল মিলুচি গম মিলুচি বুঝি বুঝি हाँ एबे टिके हस तुम बाहर तुम मुहरे MDPI हला MDPI looks at different facets of poverty. Please note down the difference between poverty line. Please note down the difference between poverty line and MDPI. The difference between poverty line and MDPI is its analysis of different facets of poverty. Its analysis of different facets of poverty. Different facet, FACT. Different facets of poverty. माने जो गरीबी कोणर विभिन्न प्रकार अछि माने एटा गरीब को विषय गरीब सर को विषय गरीब कौन तार चुली नहीं पानी आसुनी तार घर नहीं खाया पाऊनी कि स्कूल पिला जाओ अरे बुझुछ रे सो इन MDPI you look at please note down health education and assets तब जो गालुआ कथा सब कहूछ ना टिके स्पेसिफिक रो my request to all of you is be very specific in economics. Be very specific in economics. थरे तो कहला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहला माने तुमसे बाजू कर जेरा स्पेसिफिक जानी नहीं बुझु तो कथा तो अरे गति में पड़ कि खराब होनी माने यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज जिम तमे कॉन्स्टिट्यूशन रे कर दला पॉलिटिकल एटा टिके आउ टिके गरिया बाठटा बुझले कि मोर भी पॉलिटिकल साइंस एम तो पूरा संविधान टा मो मुंडरे अछि पूरा 2 सेकंड पूरा संविधान टा मो पढा सब पढा माने चनाचूर भले तो खाइ दे किंतु इकोनॉमिक्स पई बहुत भीतर को जाओ कोन बुझु तो कथा it this is a subject which requires lot of depth बुझु तो कथा किंतु थोड़ा से पानी भीतर पहुंची के तो बाहर आसला आउ को चिंता नहीं से बाहर टिके करके इनके पूरा जिसम तो हबनी पानी पूरा पसे पड़ो पानी पियो पड़ो हेल्थ एजुकेशन एंड एसेट्स हेल्थ में कौन नवा IMR MMR and nutrition कौन नवा रे हेल्थ रे nutrition 43% होचे IMR 123 हला MMR malnutrition रे 33% आर malnutrited अरे बुझছো कि नहीं मा 33% हला malnutrition कौन हेल्थ रे केते सुंदर हेल्थ रा अछि भारत रे कहलो केडे सुंदर भारत माने महान चली छी कितनी सुंदर हेल्थ केयर पूरा मैं पूरा देश का पूरा देख रहा हूं सबका भलाई कर रहा हूं हेल्थ एजुकेशन में कौन देखिबा एजुकेशन में देखिबा लर्निंग आउटकम पाठ पढुची किसी को लर्निंग आउटकम देखिबा आ केते छाड़ी के पढुचन एजुकेशन माने हाउ मेनी आर लिविंग सो एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिबा नो कि खाली एजुकेशन है जैसा भीतर जाकरी मेंढा बड़ा जाकरी पढी के पळे आउछ कि मिड डे मील खाई के आउछ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लर्निंग assets रे प्लीज नोट डाउन जोटा तुम लिविंग स्टैंडर्ड कर एसेट रे होची प्लीज नोट डाउन मूवेबल and immovable assets से कौन करना असला मूवेबल immovable asset माने कौन लैंड बिल्डिंग मूवेबल asset कौन स्कूटर मोबाइल फोन आर यू आर गेटिंग मी बुझी पड़ो तो माने तमे किछि लिविंग स्टैंडर्ड रे आसीओ पुनी तो ए जो एसेट आसीओ ए जो हेल्थ आसीओ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर तापर हैला जो gas connection Ujala scheme gas connection what is the percentage of people who are having clean fuel
how many are women are still not depending on firewood? Please note down. एवढा का सुबह आसছে हमरा কোথায় আসছে health parameter আসছে বুঝি পড়ছো তো are you all getting me so কোন सब हला सब हमरो SDI रे हला SDI GII तापरे MDPI तीनटा কথা পড় हला so ठीक है ब्रेक नाउ बोलता है ना ठीक है ब्रेक नाउ 5 मिनट का ब्रेक मोटी 5 हला 5 minutes will take a break हाँ लिविंग स्टैंडर्ड करो किसी असुविधा रे ना लिविंग स्टैंडर्ड आसो लिविंग स्टैंडर्ड हाँ सॉरी लिविंग स्टैंडर्ड आसीबो आ पक्का हाउस भी आसीबो लिविंग स्टैंडर्ड रे पक्का हाउस पक्का हाँ रखो माने कथा हो तीनटा कैटेगरी रे से माने करछथि माने तीनटा कैटेगरी रे यू विल हैव टू सी सो MDPI will give you an idea of the different dimensions of poverty. Say for instance in India, I'll just give an example to you. Listen to me. For instance in India, we have done very, very well on two things. Can somebody tell me what are the two things India has done very well after Mr. Modi has come? Very, very well on this MDPI. Electricity and drinking water. Electricity and drinking water. The deprivation percentage is only 5 to 10%, 5 to 6%. Electricity and drinking water, we have done very, very well. We have not done well in pakka houses, proper houses. We haven't done well in nutrition, we have not done well. Sanitation, please note down, sanitation we have not done very well. Sanitation is the sewage system. Please note down, sewage system. Sanitation is a very, very big challenge. Sanitation, sewage. To drainage system, your sewage system. So while we are very good on drinking water, but not very good in sanitation. Take your sanitation, the slums pura jibo, things are quite bad. Okay. So we now come to quickly we'll study 3 concepts and then we'll close. Okay. Is that okay? तो बहुत कथा है नहीं? Okay. Now, as I said, a country generally goes through 5 phases of growth. Please note down 5 phases of growth. Country goes through normally 5 stages of growth. What a country of growth as you develop koche, I mean we are semi-developed koche, some countries are underdeveloped. So they go through several stages. So Rasto had said that those 5 stages are first stage hala the agrarian state. First stage is agrarian stage. We are a predominantly agrarian economy. Loko khetire cholchonti. Buchcho to? That's called a traditional society. Buchcho to? Gai goru choruchonti. Tapare eta hoje agrarian economy. Second hala please note down preconditions for growth. Kichi kichi ame manufacturing arambh kale and banks come up. Tonka आगुर को होतला बाटर सिस्टम होतला तुमको चावल दली से तुमको गोटे छेल्टे दला that's a barter system when you are exchanging for goods that's called the barter system. Okay, so from a barter system you come to banks tonka exchange economy hala. Third stage hala you become industrialized manufacturing. Please note down from agriculture we become manufacturing country. Then we drive towards maturity where we are doing trade with others. Buji porcho. First re kon hala agrarian, second hala third hala manufacturing, fourth hala globalization, and last hala mass consumption. It is service. So with the economy, please note down, primarily there would be 3 sectors: primary, secondary, and tertiary. Okay, primary, secondary, and tertiary. Primary koala? Can somebody tell me what will come in primary? Raw products of what?
How? What will come in primary? What will come in primary? तो एकदम ठीक ठाक पूछो. What will come in primary? What will come in primary? Fishery, very good. तापरे out को. Out कौन को जानी मुझे एकदम पूरा तो देवाशीष तो. आपको. Out. Give forest. Give them a big hand. अरे पूरा उस्ताद एकदम वो पूरा एकदम तैयारी कर रहे एकदम पूरा विराट कोहली टाइप रे एकदम गिल भले अच्छे थे शुभमन गिल और ये जसप्रीत जायसवाल होते थे बुझले की so that is primary secondary है ना secondary कौन है ना manufacturing आओ manufacturing industry कौन टा difference रे मैडम पूरे एमिति उटे गोली माइला से इना उटे गोली माइला बुझले तो देखो secondary है ना manufacturing and construction please note down manufacturing and construction manufacturing and construction and what is tertiary पूरा करें select वाली तो हाँ next slide हाँ so हाँ ये देखो हाँ এটা ওটা দেখো এটা কিন্তু এটা কোয়ার জীবনে এরকম ও ঠিক আছে দেখো কোন কোন সেক্টর হলা দেখো এটা ওটিকে ওটা নিউ মোবাইল এসব এটা নিও তুমি তাহলে জানিবো কেমতি হাউ ডু এক্সপ্লেন দ্যাট ওকে here I am trying to explain the various sector भारी कष्ट है नहीं कि बड़ा कष्ट है नहीं सब कॉलोनाइट रखी छे ना प्राइमरी सेक्टर रे असला एग्रीकल्चर फिशरी माइनिंग आ ये जो कहितला तुम नाटक कोन सर जसस्वी कोन करो ना बबलू आ हला तार कोन कहला फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री प्लीज नोट डाउन फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री very very good what is India's share of primary sector in the GDP how much kete 17% hela what is the share of GDP ei table ta gote maro gote click maro tape जाइए तो बुझियो ताले बुझियो what is percentage of people employed माने एटा तो मु दोउची तबे क्लिक करो the whole so the idea is that when you click this data into the data पढिबो तमे तोर कथा हो जे how do you interpret it let me बुझबो तो when I give you a data you have to interpret that next class है तुमको टेबल देबी तुम सब कहबी तबे ताको इंटरप्रेट करो have you understood ताले तुम टिके मुंडटा लागिवो ता भितरे हैला एथरे अच्छा with this tell me Devasis what is your interpretation 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 Dr. Devasis Dr. Devasis तमरो टिके इंटरप्रिटेशन ता सर टिके हो टिके हे जाऊ सर कोनटा किछ असुविधा नहीं सर भूल के हेले किछ ठिकरा नहीं किछ असुविधा कोटा लाइन माध्यम को से बहुत बुझे पिलाटा creating and what is this share in GDP एटा काहे कि म देखु छी एते कष्ट करी सर काहे कि एटा को हावा मारचंती काहे कि मारचंती I am trying to show, try to understand this very clearly. Because next time तुमको देबी if the table देबी तभी तो करियो, हला? I am trying to explain the mismatch between employment and GDP contribution. What am I? तुम नाटक कौन करे? सनत, चल
संग्राम एथे कोन ना बुझे मु चाहूची मु बुझे मु चाहूची द मिसमैच लिखो मिसमैच व्हाट मिसमैच बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन बुझिलो mismatch between what production and production एग्रीकल्चर में केते लोक अछंती प्राय 50% पीपल हमर भारत रो जो 14 कोटी लोक रु आउट ऑफ 14 crores sorry 140 crores almost 50% people are in the agricultural sector प्रोड्यूस करछि केते 17% बुझि परछ कम करछि ना बेसी करछि बहुत ही कम करछि जो गाँ रो जो दुरवस्था अछि इट इज बिकॉज ऑफ दैट Are you all getting me? Are you all getting me? गाँव रो जो दुरवस्था अच्छी, it is because there are people working on small plots of land. ये जो गरीबी जो होची, तमे जो हमारे ठी गाँव रे तमरो कौन होची? So गाँव रे we see a phenomena which you call as, please note down, disguised employment. Disguised employment. ए कॉन्सेप्टटा गोटे बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट करथिला ता ना होचे रैगनर नक्से प्लीज नोट डाउन रैगनर नक्से NURSKE रैगनर नक्से क्वेश्चन आसीबो फिल्म रे व्हाट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट माने गोटे एकर जमी रे जने यदि काम करियो दैट्स एनफ लिसन टू मी वेरी केयरफुली सपोजिंग यू हैव 1 acre of land and if just one person is working on that it is sufficient but in a village you will find 5 people are working in a plot of land of 1 acre so 2 people are working on a small plot of land are you getting my point बुझी पड़ती कि नहीं एम्प्लॉयमेंट छी मु जाउची जमी को किछि काम नाही माने when you are underemployed are you getting my point that is called disguised employment are you getting my point what is disguised employment where you are not sufficiently employed खाली जाउचो सर जाउची काम को जाउची किछि काम नाही सेठी होसी माछी मरचो सिकि माछी मरचो मसा मरचो बुझो तो चलची सो ये होते डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कौन बुझे कि सर ये होते डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रैगनर नक्से कहला जे भारत रे बहुत डिस्गाइज्ड भारत रे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज अबाउट 20% ए जो 50% लोग जो काम करचंती ए थ्रू मिनिमम 30% पीपल आर डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड काम दाम किछि नै जाउचंती सेठी खेती करूची पांचटा लोक सला जाउचंती से गोटे बिडा धान पई पांचटा लोक एठी करचंती so what is so first thing we find there was is that this tremendous amount of underproduction underproduction there is a mismatch between what there is a mismatch between employment and production contribution to production बुझिलो तो there is a mismatch between what employment and contribution to production चाइना देखो चाइना रे केते थिले 20% लोक एग्रीकल्चर रे काम करछन प्लीज नोट डाउन व्हाट इज द प्रोडक्शन 17% ठीक ठाक अछि ना नहीं ठीक ठाक अछि ना नहीं ए जो आर्टिकल ता देछि ए से सब ए तर पढु सेटा मु एटा कहला पर तमे ए आर्टिकल बुझि पारिबो बुझि पौ अच्छा सेकंड केते अछि भारत रे से केते 25 and what is the production 25 बुझलो कि नहीं what about the services what is the employment 27 and what is the share so which is the most paying sector Jadi if you become an engineer you get 25,000 if you are working as a fitter in a factory you are getting 20,000
If you are working in a agriculture sector, you are getting 10,000. Is that clear? Is that clear? Clear. So what do you find in India? What do we find in India? That the service sector is doing extremely well. And clearly, and there are too many people in the agricultural sector. Is that clear to all of you? There are too many people. Now you look at China. What do we find in China? The industrial sector is very, very good. Just see here. 38%. So that is how, please note down, China is a manufacturing hub. China is a manufacturing hub, the basis, because of this. Can you tell me which are the countries which are called global manufacturing hub? Say next time to start. USA ko chhada mara goli taku mara goli. Manufacturing hub out na suko. USA ko chhada. China, yes. Koi question hai bujhi parcho na nahi? Mane joti manufacturing is a very, very major thing, and that has a global imprint. Bujho to? Are you all getting me? Russia bahut badhiya. How ko? Sabura jancho vithi bolo how ke? How? Kota Vietnam. ठीक अछि खराब how ko? How ko? China, Russia, Japan, how? Japan, Germany. हाँ के कौन सर? हाँ सर कौन तू कौन ती ज्ञानटा सुनाटी सर आपन को टिके आउ के ज्ञान सर टिके सुनते टिके ज्ञान टी दियंतु टिके France, Italy. कौन कहले सर? France and Italy. आसामी? Italy. France and Italy. इटली ये मारो गोली जनाब सोनिया गांधी को मारो गोली साउथ कोरिया प्लीज नोट डाउन द्वितीय विश्व युद्ध पर प्लीज नोट डाउन द्वितीय विश्व युद्ध पर मजा अच्छी कि नहीं तुमको द्वितीय विश्व युद्ध पर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर तुम नाटक कौन कहला आफ्टर दिस एबे बुझी पड़छो तो after the Second World War in 1945, 5 countries in the world are today recognized as global manufacturing hub. Where? Please note down. Where? Where X minus M is more than 1. Where X minus M is more than 1. Their balance of trade is positive, whose exports ipsita is more than import. Are bucho ki nahi? Panchota desha, not USA. There are only 5 countries where export is more than import because they are manufacturing hubs. बुझी पड़ो कि नहीं? अरे 38% लोग सोसाइटी माती छंती 40% people are in manufacturing. Similar percentage you'll find in Germany. All these countries are you getting my point? All these countries are big manufacturing hubs. Bharat, please note down, if India is not doing well, it is not doing well because its manufacturing sector is weak. Bujhla Abhishek? Bujhla, amount of manufacturing is only 25%. Whereas those countries where they have become big manufacturing hubs, they are how much? About 40% people are in the manufacturing sector. Manufacturing advantage it gives a lot of employment. Some steel plant road hela, steel hela, hospital education a lot of backward linkages. Please note down. Manufacturing has a lot of backward linkages. Backward linkages mane same industry jogu onek jinsa ta jogu hochi. Jodi steel plant hela ta pakhre hospital habo.
ता पाखे स्कूल हबो ता पाखे रोड हबो बुझिल तो आर यू ऑल गेटिंग मी तमे जदि गोटे लैपटॉप तमे हबो सी लोकटी को लैपटॉप करियो आ को पास्ता चित्र हबो चाकरी हबो की बुझि बुझ ना नहीं so that is why world over those countries which have done very well they have very sizable investment in the manufacturing sector. Is that clear to all of you? Third, services sector in India's contribution is very good, but it is not employing too many people. Are you getting my point? Have you understood? Have you understood or not? Have you understood or not? এই টেবুলটা কো মতে এক্সপ্লেন করি মতে মেল করিব আজি আজ রাতে পড়ি মতে মেল করিব আনসারটা কই কুচেটে বল বুঝ পারছো তো না লুক এট চাইনা হোয়াট ইজ হ্যাপনিং প্রাইমারি সেক্টর রে 20% এমপ্লয়মেন্ট নাও ইন চাইনা প্লিজ নোট ডাউন in 1951 51% was here and the output was only 20. In 1951, please note down the assistant month of Etago. Odisha economy masiyare Bharatare around 55% was in agriculture and they were contributing about 15%. Please note down. Buchi porchona name kotha. 1951 masiyare China re 50% people were in agriculture. It has come down to 20%. So what has happened? So people have moved away from agriculture to industry. Have you understood? Have you understood this or not? 51 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବି 51% ଥିଲା ସି ଗାଁରେ ଥିଲେ ଗରିବ ଥିଲେ ଆଜି ଚାଇନାର per capita income ଆମଠୁ 3 times more ଆମର 2004 ସାଲ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 7-8,000. That is largely because people have moved away from agriculture to industry. जे खेती की 10,000 पाउतला आज से इंडस्ट्री 20,000 टका पाउछि. Have you understood this? Have you understood this or not? Now in the services they also employing far more persons than us in the services sector. Can you see that? Can you see that or not? Can you see that all? Now we will do for USA. Please note down for USA. USA re 5 ଆଉ 5. See. Please note down. এটা কোন আমি তো কোশ্চেন দেবি সেটা তোমাকে এটা দউছি USA দেলি কেতে লোক এগ্রিকালচার অছন্তি Take a snap. केते लोग अच्छे स्नैप नियो मुझे क्वेश्चन देबी तुमको कारण मते आज रात्रि करी तो पठेबो यूएस रे केते परसेंट अछन एग्रीकल्चर रे केते अछंती व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन 5%. व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री our production was 35. What is the share in services and what is the share in GDP? ता माने कोन they have more doctors, nurses, lawyers, teachers than us. Amar bhi 57 okay. Just see the comparison. ये भलो कि बुझियो चेष्टा करो आमर इंडिया रे जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस रो केते होची प्राय 60% होची ना नहीं केते लोक अछंती ओनली 27 ती भलो कि बुझियो चेष्टा करो सुधा. In India, 60% GDP we are getting from where? From services. How many people are engaged? Only 30 people are engaged. In USA, with the same output, how many people are there? 60% are. So, that is basically tankar service sector bahut lok kaam karuch. More teachers, more doctors, more nurses. So health of a developed country is judged by the number of people in this sector. कितने लोग अछंती हेल्थ सेक्टर रे कितने एजुकेशन अछंती अरे बुझु कि नहीं there are 8 here amaro for 1,000 patients we may have one doctor they will have 5 doctors for 100 patients. Are you getting it? That is how we become a
healthy country. So in this article, we'll end with it. In this article, এই যে আর্টিকেলটা আছে এটা পড়িব সমতা আছে মতে কে গালো মারিবনি স্যার মু পাই নথিলি স্যার তুমি পাইছো তো সমত পাইছো তো পাই নথিলি স্যার তবে আছে তো হ্যাঁ so in this article what he is saying Nitin Desai is saying that what should India do কোন পড়িব এই যে বাজেট निर्मला सीतारमन ये जो बर्तन जो गजरा खाइले कोनटा कौन खाइले এটা जो खाइले नी जो कोनटा हलवा खाइले गाजर हलवा खाइगिरी ताको गाजर हलवा सांगरे एई ताको लड्डू खुएला नितिन देसाई जे मैडम गाजर हलवा फल तो खाइले सबु आपण देखंतु जे आपणकर जो बजेट करिवे सेइथरे जीडीपी ग्रोथ कथा भाबिबेनी आमे ताड़ी पकेबनी आमे 5 ट्रिलियन रो 6 ट्रिलियन डोंट टॉक अबाउट दैट your first objective would be how to please note down how to move people from agricultural sector to manufacturing and services in nutshell one line what should be your strategy how save about 25% people from manufacturing and services. तमें विकसित भारत अब बुझे आओ बेसी कोई भी न तुम लिखियो ताल लेखो क्वेश्चन लेखो क्वेश्चन लेखो it will end with this okay so कोड क्लियर करियो रे क्लीन हां So we'll end with this. So the question that you will do today, before you go to your bathroom tomorrow, question please write down. Based on the sectoral composition of India, based on the sectoral composition of India, please suggest the changes that should be brought about in the upcoming budget. In the upcoming budget. प्रथम गोटे लाइन लिख what is विकसित भारत तापर को देवाशीष पढ़ लो तापर को what is विकसित भारत हाँ तापर हाँ प्रथम करो what is विकसित भारत हाँ what should तापर कौन लिखी what should India in the budget बुझल तो सो इथे कौन किम आंसर करिवो जे विकसित भारत को नेट रे पढ़ी की ताको मार दबो लाइन ता मार दबो तापर तमे पाई गला संग संग ऐसे किछ असुविधा नै तुमको बता दरकार नै तापर तमे गला तापर तमे ओटे टेबल मारिवो प्रथमे कहो आंसर किम तो स्ट्रक्चर तो कहि दोची स्ट्रक्चर ऑफ आंसर तुम कहि दो ता तमे सब तो मन इच्छा तमे लिखिबो हला तमे मन इच्छा न लिखरी प्रथमे लिखिबो इंट्रोडक्शन जे कोन होडा क्वेश्चन आसले तमे लिखिबो एथरे प्रथमे लिखिबो जे the question to be answered is how can India, transform its structure to achieve greater growth in pursuit of Viksit Bharat. एमती करी आरंभ करिवो है ना तापर कहबो जे the present sectoral composition of India is placed below. A comparison has also been made with China. टेबल टेस्ट करा हार्ड पार्ट रे तमे बुझि पछतो तापर करो टेबल टक बुझले कि तमे मन इच्छा लिखिबोनी तमे मन इच्छा
कोठी तमे तमर ज्ञानटा किछ देखा पी एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर तापर लिखलो टेबलटा शो करिवो इंडिया और चाइना कंपैरिजन हैला तापर तार इंटरप्रिटेशन करिवे सर तार इंटरप्रिटेशन करिवे सर एइटर असुविधा हला एइथरे दिस इज द डिफिकल्टी इंटरप्रिटेशन तापर कहइबो तमरा सजेशन कौन सजेशन तुम हला तमे एइटा को लिखियो 250 वर्ड रे 250 वर्ड्स रे एइटा करिवो हला 250 वर्ड्स से करिवो तमे मते कालिस लंच पूर्वरु मते मेल करिवो each one of you will send through mail हला भलो करी बसकरी मेलटा करिवो मोर मेल आईडी टा हबो MISRA तमे आउ गालो करे पथरा थियो sn54@gmail.com तो दी वर्ड फाइल करि करि बढ़िया तो पठेबो शुक्रवार दिन जहा को 1 2 3 जे नंबर 1 नंबर 2 हो का गोटे चॉकलेट आधा चॉकलेट कोनी चॉकलेट हला हला तो बहुत से मीटर बढ़ियो परे बढ़ियो बुझ परछ कथा कटे कष्ट है केटा किछि ना एटा बहुत सहज कथा एई भला क्वेश्चन आछो even in the IAS also this is the level of question you'll get in the IAS not more than this are you getting my point I have prepared you today what is required for somebody who is appearing for the IAS main examination एटा जो तुम कहली एटा होची गोटा बुझि परछो कथा पर कि हबो एटा हबो हौ ताले बाय बाय ए जो माने एमाने भी नै थिबे ना नहीं क्वेश्चन नै सर माने टी नेले की क्वेश्चन टाको हे देवाशीष सर टी डाके आसले टी देवाशीष सर डाके देता उठी हां कोट करे सर हाँ can you just हाँ you kindly send it to me गोटे हला दीक्षित भारत को डिफाइन करिवे तापरे टेबल टा साथी करिवे तापर ताको इंटरप्रेट करिवे करिकरी तापरे आपनकर मतामत देबे कोन सेटा को जहार मतामतटा बेस्ट हबो सेटा को मु पठेबी निर्मला को कहबी निर्मला मैडम एम जे हमर जो भुवनेश्वर रो आईएएस एकेडमी रो एम सो सेशन सब आछिची आपन ताको देखिबे ताको ध्यान देले भलो होता और पिला माने नितिन देसाई आर्टिकल ताको दिया जाय छै से नितिन देसाई आर्टिकल साथी पठे देबे we will send you the article by Dr. Nitin Desai on this today which has come in Business Standard today please go through that article eta kim पठेबो कर देबे तो सर कर देबे तो हो आज कर देबो हला तो ताल तुम आपको चलिबो को बुझरे की तमरा हां सरला सा तो दे दिली क्वेश्चन गोटे देछि गोटे हैव गिवन देम अ क्वेश्चन सो बेस्ड ऑन दिस से करिवे ताल जणा पड़ जो सब केमति कोन मान सब विकसित भारत कौन सब बुझचंती विकसित भारत कौन सब बुझचंती सब जणा जीवो ना ठीक अछि ना हां एमान को सेमति कॉलेज जाई कि थोड़ा बुझिबे नले आ आपन कोन केमति मार देबे क्वाड मार देबे से किछ जानि होबा ना बुझले कि किछ जानि पेरि ना ठीक है से जो एटा गुटी पिला गुटी पठे देबे कोन कहले हमर जो ऑनलाइन पिला को एटा को पठे देबे अटी सार गुटी पठे दो से क्वेश्चन रे सार भी पठे देबे से ऑनलाइन रे पठे देबे बहुत कथा कहै छै बहुत कथा तक कहै छै कम हला कि ठीक है ना हां हां ना हालत एकदम हां नहीं तो हरटी बुझिए तंको जे आईएएस लेवल रो तंको जे प्रिपरेशन कराई छै बुझले की सर तंको आईएएस लेवल रो जे प्रिपरेशन कराई छै सो दैट यू नो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन